वेलकम बैक फोक्स। आज हम बात करेंगे जो सिटी ऑफ शुगरलैंड के अपकमिंग इलेक्शंस हैं फॉर द मेयोरल पोजीशन, फॉर डिफरेंट काउंसिल मेंबर पोजीशंस फॉर द सिटी ऑफ शुगरलैंड। तो सबसे पहले हमारे जो कुछ कैंडिडेट्स रन कर रहे हैं, पहले जो कैंडिडेट जो रन कर रहे हैं इज़ नौशाद करमाली। आई थिंक ही हैज़ अ स्टैचर अबव द रेस्ट ऑफ हिम। बहुत पॉलिश्ड, बहुत क्रिस्प कैंपेन रन कर रहे हैं। He is in currently is a council member of the city of Sugarland. मेरा जो इंटरेक्शन था नौशाद करमाली के साथ, I would say about 5 years ago. He had just been recently elected as the Sugarland City Council member, and I sent him an email. I found his email from the city of Sugarland. I sent him an email on a Friday afternoon. I had some concerns about my subdivision, and he immediately responded. And over the weekend, इनके जो ऑफिस के associates थे, they contacted me, and by Sunday they had addressed my concern. So I was very impressed. ये मेरा पहला experience था उनके साथ, very positive. Second time, then I had an interaction with Noshad Kirmali, and then I had a disagreement with him. और लाइफ में जब आपका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट होता है ना, दैट्स व्हेन यू गेट टू नो दैट पर्सनस ट्रू कैरेक्टर। क्योंकि जब तो आपकी अच्छी बातचीत चल रही है उसमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन when you really disagree with someone in a heated fashion, you get to know their true character, that person's true character. So I called Noshad Kirmali. He was expecting my call and he knew that I was upset about something. And we had a very heated exchange, and I gave him my peace of mind. I was very hot, very heated, and I have to admit that he listened to me very patiently. He was very genuine, candid, and honest. He did not agree with me. He stated his point of view in a very articulate fashion, very professionally, with great professional courtesy, and he treated me with human dignity. Or us दिन, that day, I really, he went a few notches in my book. Okay, he's a very polished individual. And finally, we agreed to disagree on some of the things we were talking about, and we really walked away with a lot of respect for each other. So that was my second interaction with them. My third interaction with Nashad Kermali was when हमारी कम्युनिटी के एक कैंडिडेट थे, वो रन करना चाह रहे थे, उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। एंड नौशाद किरमाली को हमने कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि आप शुगरलैंड के सिटिंग काउंसिल मेंबर हैं, आप कोई हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं, ये हमारा कैंडिडेट है हमारी कम्युनिटी से। एंड नॉर्मली ऐसा होता है कि जो लोग खुद किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे पहुंच गए हैं, दे आर द पायनियर्स इन द कम्युनिटी, वो किसी और को आने नहीं देते कि भाई ये कल आके मेरे साथ कम्पीट करेगा। लेकिन नौशाद करमाली इज़ नॉट एन इनसिक्योर पर्सन. He went out of his way to help this candidate from our community. And what he did was he arranged meetings with the kingmakers of the Fort Bend County politics. क्योंकि हर काउंटी के अंदर, हर सिटी के अंदर कुछ लोग होते हैं, वो पुराने एस्टेब्लिश्ड होते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। ये अमेरिका है, आपको पता है वो कौन लोग हैं। और फोर्ट बेंड काउंटी में भी बहुत इस्टेब्लिश्ड लोग हैं पुराने, जो 50-60 साल से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो नौशाद करमाली रीच्ड आउट टू देम एंड ही प्लीडेड विद दीज किंग मेकर्स ऑफ फॉर्ट बेंड काउंटी कि ये एक नया कैंडिडेट है हमारी कम्युनिटी का, आप इसको चांस दें, आप इसकी हेल्प करें, आप इसकी बात सुनें, आप इससे मीटिंग करें। नौशाद करमाली ने खुद मेहनत करके मीटिंग सेट की. आई अटेंडेड सम ऑफ दोज मीटिंग्स, and these kingmakers were like, who's this guy Noshad that you're talking about, we want to meet him. And Noshad Karmali really pleaded and campaigned for this guy, took him under his wing, and really showed a lot of respect and support for this candidate from our community. So that was my interaction at that point with Noshad Karmali, and I realized that this guy is different. He's very different, and he did this absolutely in a selfless fashion. There was no benefit or self-interest involved, and I was very impressed. उसके अलावा one person contesting against Nashad Kirma, I think Ferguson is his name. Now this guy, nobody knows if he's a Democrat or Republican. Now City of Sugarland की जो races हैं, they are non-partisan, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, आपको थोड़ा पता चलता है कि कैंडिडेट का स्टैंड क्या है इशूज़ में। तो ये थोड़ा विश वॉशी सा आदमी है, you just never know where he stands.
बाकी जो हैं वो देर नो बारीज उनमें से कुछ तो हैं वो सिटिंग काउंसिल मेंबर हैं, दे हैवंट डन एनीथिंग, दे जस्ट गो ऑफिस एंड कम बैक. सो नौशाद करमाल इज़ रियली above rest of firm, great stature. I think he needs all of our support. उसके बाद कुछ और कैंडिडेट्स हैं हमारी कम्युनिटी के, जैसे मुजफ़र वोरा है, वेरी एजुकेटेड, वेरी पॉलिश्ड इंडिविजुअल, raised his family in Fort Bend County. नासिर हैं, ही इज़ आल्सो हाईली एनर्जेटिक, ग्रेट एंथुजियाज्म. मैंने उनकी अभी एक कैंपेन इवेंट अटेंड किया है एट अ लोकल रेस्टोरेंट एंड ही केम अक्रॉस एज हाईली मोटिवेटेड, हाईली एजुकेटेड. सो हैट्स ऑफ टू हिम. एंड देन यू हैव अमीर अरसलान मलिक, बहुत पॉलिश्ड इंडिविजुअल हैं, उन्होंने बहुत अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं मुख्तलिफ अपनी पोजीशंस में एज ए टाइटल कंपनी ऑफिसर, एस्क्रो ऑफिसर. तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, कई डेकेड्स लगाए हैं. सो दे नीड आवर सपोर्ट. इनके रन करने से हमारी कम्युनिटी को एक बूस्ट मिलता है. दे पुट आवर नेम्स ऑन द बैलेट एंड देन इवन दो हमारी कम्युनिटी का जो टर्न आउट है इन दीज इलेक्शंस इज़ लेस दैन 10% ऑफ द वोट, लेकिन एज मोर एंड मोर ऑफ आवर नेम्स अपीयर ऑन द बैलेट, हमारा टर्न ओवर भी बढ़ता जा रहा है. सो विच इज़ वेरी इंकरेजिंग. उसके अलावा कुछ और हौज पौज किस्म के कैंडिडेट्स हैं. And I think I consider them, I'm not going to name them, I would say that these are non-serious candidates. ये कभी कांग्रेसमैन के लिए रन कर रहे हैं, कभी ये कांस्टेबल के लिए रन कर रहे हैं, कभी ये पुलिस का लाइसेंस लेने जा रहे हैं, कभी ये मेयर के लिए रन कर रहे हैं. इनमें से कुछ ने पहले रन भी किया है, बहुत नॉन सीरियस रन था, देयर वाज ज़ीरो एंगेजमेंट, ज़ीरो एफर्ट पुट अप बाय देम. सो आई डोंट थिंक much of their stature. लेकिन once again, Noshad Kermali, Muzaffar Vora, Nasir, Amir Arsalan, they really are candidates to look out for. And I think with in the coming weeks and months, you'll see that most likely Noshad Kermali will be way ahead in the polls to secure the seat as the future mayor of Sugarland, and the other three candidates also show a lot of promise. So abhi tak itna hi. As things develop, we'll come back and visit with you. Thank you.